comes to your health, every second counts. At MGM Healthcare, we understand the urgency of emergency situations. We are proud to offer Level 1 trauma care with an exceptional team of senior consultants and super specialists available round the clock 24/7. Trust us to be there when it matters the most. Your health is our priority. MGM stands for emergency, where every second counts and your well-being comes first. नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए ये जो एपिसोड ला रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर मैं अपने कई रिपोर्टिंग में ये बात ज़रूर कहता हूं कि एक देश का विकास तभी हो सकता है जब उस देश के जो नागरिक हैं वे स्वस्थ रहें और शिक्षित रहें। हमारा स्वस्थ रहना हमारे देश के विकास में कितना बड़ा योगदान है, इसको अगर हम समझ जाएंगे तो हम सब अपने देश के प्रति जो प्रेम रखते हैं उसे और बढ़ाने के लिए, उसमें अपनी भागीदारी देने के लिए हम अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देंगे ताकि हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे समय पे उठना, समय पे खाना पीना, किन किन चीज़ों का, किन किन खान पीन के पदार्थों का कितने क्वांटिटी में उसका इस्तेमाल करना, कब कब खाना, कैसे खाना, और साथ ही व्यायाम करना और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना। ये सारी चीज़ें एक इंसानी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर डेफिनेटली हम स्वस्थ रहेंगे, और हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो फिर हम अपने परिवार का भी उतना ही अच्छा ध्यान रख पाएंगे, और साथ ही हम अपने देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे आप लोगों ने बातें सुनी होंगी, यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे पूरे अंडमान निकोबार में जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है उसको लेकर। जब हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता होती है तो हम चाहते हैं कि हमें बेहतर से बेहतर इलाज मिले, फिर चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या पब्लिक अस्पताल। स्वास्थ्य को लेके किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, फिर उसके लिए चाहे उसे जो मूल अदा करना पड़े। इसी सिलसिले में हम जो हैं MGM हॉस्पिटल्स चेन्नई, वहाँ से आए 5 डॉक्टर्स जो 5 अलग अलग फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, हम उनसे बात करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। हम उन लोगों का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम लगातार स्क्रीन में डिस्प्ले करते रहेंगे, ताकि आपको भी अगर किसी भी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी या जिस फील्ड में ये डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड हैं उस फील्ड से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इलाज के लिए भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस कड़ी में हम डॉक्टर मिली मैथ्यू जी, हम इनसे बात करेंगे, जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि मेडिकल भाषा में नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो इनका जो मेन स्टडी होता है वो गुर्दों से होता है, यानी कि किडनी की स्पेशलिस्ट हैं, और किडनी से ही जुड़े कई सारे सवाल होंगे जो हम डॉक्टर साहिबा से जानना चाहेंगे, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले। अगर इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मैम भी जब कमेंट्स देखेंगे कि तो उनका रिप्लाई भी दे पाएंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैम हिंदी समझती हैं, मगर उनको बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए मैम जो है अंग्रेजी में ही बोलेंगी और उसका अनुवाद हम आप लोगों के लिए हिंदी में करेंगे, ताकि जिनको समझने में दिक्कत हो रही है वो मेरी बातें सुनकर समझ पाएंगे। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, वेलकम टू अंडमान आइलैंड्स। Thank you. Is this your first time to Andaman Islands? I come every month since Okay. November. Since November, last year In the November. hospital, yeah. हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि MGM अस्पताल से जो स्पेशलिस्ट हमारे द्वीपों में विजिट करते हैं वो पिछले 7 महीने से लगातार पिलार अस्पताल में महीने में 2 मरतबा आते हैं। इनका मकसद सिर्फ अपना जो हुनर है उसे यहाँ नहीं दिखाना है, बल्कि सेवा भाव से भी ये डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं, जिनको हम पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है, सूत्रों से भी हमें पता चला है कि तमाम जो डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं वो उन लोगों को भी निःशुल्क इलाज देते हैं जो काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हैं। और ऐसे भी आम तौर पर जो इलाज यहाँ पे इनके द्वारा दी जाती है, इसमें काफ़ी हेवी डिस्काउंट भी दिया जाता है। वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज कम से कम दाम में मिले, जिसके लिए हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। थैंक्स टू द होल टीम ऑफ MGM हॉस्पिटल डॉक्टर्स। फ़िलहाल हम मैम से
कुछ जानना चाहेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि मैम जो है किडनी स्पेशलिस्ट है, इन्हें मेडिकल भाषा में नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। मैम वुड लाइक टू नो फॉर आवर व्यूअर्स, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज CKD, chronic kidney disease, please. Yeah, it is means chronic kidney disease means it is a irreversible damage to the kidneys, so that kidneys cannot perform its function. The function means filter, Right. or the excretory. There are multiple functions for the kidney, Right. but the main thing is filtering the waste which is coming into the body or into the blood, and it filters out through the urine. Right. And the kidney is damaged. That function is water, everything, the salt and water and urea, creatinine, everything. It will remain in the blood. Okay. So that causes Chronic. kidney function. Chronic means it's a long-standing disease, not just weeks. About 3 months we say any disease above 3 months it lasts. It is chronic. हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। मैम ने बताया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती क्या है। जब एक लंबे समय तक आपका जो किडनी है इसमें तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है और उसका इलाज नहीं होता है, तो फिर उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है, जो कई कारणों से होता है। और जो किडनी का जो हमारे गुर्दों का जो फंक्शन होता है, जो जिस तरीके से शरीर में उसे काम करना चाहिए, उस काम को करने में जब वो असमर्थ हो जाता है, तब उस स्टेज में वो जो किडनी में जो बीमारी होती है उसे कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। जानने का प्रयास करेंगे मैम से कि किन कारणों से CKD होता है। Like elders, it is the main cause is diabetes mellitus and hypertension, which we know that a lot of patients are diabetics nowadays. We know that the lifestyle changes and so many factors. In between, I would like to know, where I've read somewhere that 80% of the world population is diabetic somehow. Is it true? It is true. And China is the first country. Then it is going to be our country, India. Where we don't have blood vessel? Only one place, which is lens of the eye. All the other places we have blood vessels. Very true. So you can imagine, kidney is containing very tiny, small blood vessel which cannot be seen by eyes, and when it affects, so that is why the kidney is affected more. And in the same way, they can have eye problem, which is always, there is also smallest blood vessels are there, and the heart disease. Then the peripheral, like they have neuropathy, they can have stroke. Right. So all are complications of diabetes. So the main reason you're saying is hypertension and diabetes. And what causes hypertension and diabetes? Because there has to be some starting point for these things. Only then the person gets CKD, right? No, the cause for the diabetes and hypertension, many factors. One is genetic factors, and nowadays the lifestyle, food habits, Right. lifestyle. These are the main causes nowadays. People, we know that. Right. क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, इसका जो मुख्य कारण है एक शरीर में आने का, उसका वो है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। और हम सब शायद जानते ही होंगे कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ किन कारणों से आता है। तो अगर हम शुरुआत से ही एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएंगे, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि कैसे खाना है, कितना खाना है, कि खाना पीना अगर हम अपना ध्यान रखेंगे और साथ में थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली हमें CKD का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर देखा गया है कि जो थोड़े उम्र दराज लोग होते हैं, जो मिडिल एज होते हैं, उनको ज़्यादा किडनी प्रॉब्लम्स होता है मैक्सिमम केसेस में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो यंग लोग होते हैं, यूथ होता है, आज के जो यूथ हैं, इनको भी CKD हो सकता है? Yeah, of course. Children to young adults and adults. Right. All age group can have chronic kidney disease. But the cause, Even young children. young children. See, for example, age up to 4 years, they can have defects, birth defects, the kidney failure, right. or the urinary tube failure, reflex failure, bladder failure. So they can have kidney disease, Right. and they can have some genetic disorders. Right. Right. And young people, they can have nephrotic syndrome and diseases affecting the glomerulus, that is the filter of the kidney. So these are, and that also comes in genetic
diseases like IgA nephropathy, FSGS. These are all has got a genetic connection also. Okay. And those who have kidney disease, such like polycystic kidney disease, another one, which runs in families. Okay. The parents or grandparents or somebody have that, and all the children, all the family members should be checked for it. It's a water filled cavities which comes and it progresses. Right. And young adults, again, like diabetes, hypertension, disease of the glomeruli, Yeah. So why do the young people get? Same reasons. obesity, junk. I mean, you ask me that junk food can cause. Junk food can lead on to obesity and cholesterol, disarrangements, and then like all can lead to kidney disease. तो जैसा मैम ने बताया कि ये भी संभव है कि आज के जो हमारे युवा लोग हैं उनको भी सीकेडी हो सकता है अगर वे ध्यान ना दे तो, खासकर खान पीन को लेकर। जैसा बार बार कहा जा रहा है कि अगर हमें अपने किडनी को स्वस्थ रखना है तो फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है और समय समय पर इसकी जांच भी कराएं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो अब तक हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है मिली मैम से कि किस तरीके से किन किन कारणों से जो है क्रॉनिक किडनी डिजीजेस होते हैं। अभी हम ये जानना चाहेंगे मैम आपसे कि क्या इनका इलाज है? Once the kidneys are damaged irreparably, it is not curable. Okay. It is not. People think that it is curable, and somebody will come and say that okay, the Ayurveda, Siddha, all those medications. Oh, there is a treatment for that, which is not possible. Okay. There is no treatment in the world once a patient has got chronic kidney disease. There are different stages: early stage, late stage. At a certain stage, you cannot cure it. अच्छा. Early stages, if you diagnose early, we can prevent the progression of the disease. Okay. Or make it, the progression. That stage, is it also called CKD or is it called something? 5 stages of CKD. Right, that's what I was. Early stages like 2, 3, 4. Okay. We can make it, like Stop. stop Okay. or Control it. prevent progression. It is a progressive disease. अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो शीर्ष पर पहुंच जाते हो, उस लेवल तक पहुंच जाते हो, फिर ये ला इलाज है। मैम का कहना है पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है, मगर इसके भी स्टेजेस होते हैं। अगर आप शुरुआती स्टेज में ही अगर इसकी जांच करा लें और अगर डॉक्टरों को पता चल जाए कि ये सीकेडी का पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा स्टेज है तो इसका इलाज संभव है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर डॉक्टर्स आपको जिस तरीके का सजेशन देते हैं, अगर आप उन सुझावों का पालन करते हो तो डेफिनेटली आप इस पे नियंत्रण कर सकते हैं। Kidney disease will not give any symptoms. अच्छा. It is a silent disease. Unless you check, then only you come to know that okay, there is a rise in the creatinine, there is a protein leak in the urine. So what we have to do is people who are diabetics and hypertension, the recommendation is to do the urine test for microalbuminuria and the urea creatinine are the first signs what we can diagnose or find out. A blood test called urea and creatinine. These two has to be done every year. Okay. So every year, then only we know that, because it will not give you any symptoms. It will go on like that. Finally, when you get the symptoms, it will be too late. देखिए ये कितनी खतरनाक बीमारी है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है बहुत खतरनाक है। जैसा भी मैम कह रही हैं कि इसे साइलेंट डिजीज़ कहा जाता है। ये आपको लक्षण तक नहीं दिखाता है आपके शरीर में कि आपकी जो किडनी है वो ख़राब हो रही है। जब ये पूरी तरीके से लगभग काम करना बंद करना शुरू कर देता है, यानी कि अंतिम स्टेज में रहता है, तब पेशेंट को समझ में आता है कि उसका किडनी जो है ख़राब हो चुका है, अब उसे इलाज की ज़रूरत है। मगर मैम का कहना है कि तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए मिली मैम का सुझाव है कि एक आम वयस्क को जो है साल में एक बार कम से कम किडनी जांच ज़रूर करानी चाहिए। खासकर आजकल के दिनों में जब इस तरीके का खान पीन का हम इस्तेमाल करते हैं इस बिज़ी लाइफ में, एक सलाह ये है कि आप इसकी जो है रेगुलर जांच ज़रूर कराएं ताकि आपको पता चले कि आपकी किडनी स्वस्थ है या नहीं। When the stages goes up, when the kidney function goes low, and when it reaches stage 4 or 5, some people, usually it will be a accidental finding. You go to the hospital for some other
disease and you check it, And then you will find to have that protein leak is there, and there is an increase in the urea and creatinine in the blood test, or there is an anemia, hemoglobin is low. All those things only will tell you that the reason the kidneys are affected due to diabetes or hypertension. So when the stage, the higher stages comes, the symptoms what they experience is most commonly they'll not feel like eating. Their appetite goes low, and they feel very tired. And tiredness will come, and there some people have decreased urine output. The urine what they produce per day or what we pass per day will come down, and they'll have sleep disturbances. Sleep disturbance. They sleep in the daytime, and night they will not be able to sleep, and they can have more frequency of urine at night, and they can have swelling in the legs, and leg swelling. It's advanced stages when the symptom comes, and the emergency what comes in kidney disease is they become breathless, breathing difficulty. So they will not be able Whole to. day or Suddenly it can come, suddenly some people come with suffocation. They will not be able to breathe because of the fluid retention, like fluid overload. It will go to the lungs. They will not be able to breathe. Because a lot of fluid is there. Kidney is not filtering out. So they can have breathing difficulty. They have continuous vomiting. They can have, even disturbed mind. So that is called restlessness, and then won't be able to sleep, and sometimes they go into coma also, unconsciousness, where you have to attend the patient immediately, start on dialysis, and take them. मैम का कहना है कि कई बार लोग जो हैं इसको इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं किडनी बीमारियों को, तो इसीलिए लोग इसका चेकअप भी नहीं कराते हैं। कई बार एक्सीडेंटली किसी और केस में जाते हैं, वहाँ पे इनका जब यूरिन टेस्ट या हेमोग्लोबिन के लिए उनका जब टेस्ट लिया जाता है, तब उन्हें डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि उनके किडनी में भी प्रॉब्लम है। तब इनका जब इलाज होता है तब उन्हें पता चलता है कि उनको जो है सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के भी वे शिकार हो चुके हैं। तब इंसान काफ़ी अचंभित हो जाता है कि मुझे अब तक तो ऐसा कोई कुछ पता नहीं चला, तो फिर ये कैसे हो गया। वो यही मैम का कहना है कि ये एक साइलेंट डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स शुरुआती स्टेजेस में नहीं पता चलता है। आखिरी स्टेजेस में इसके कुछ सिम्टम्स है जो मैम ने अभी हमें बताया कि आपका जो नींद है वो ख़राब होने लगता है। आपको ज़्यादातर नींद दिन के समय आता है, रात को आप सो नहीं पाते हो। फिर आपका जो यूरिन होता आपको बार बार रात के समय में ज़्यादा यूरिन लगता है, आपका पेशाब लगना शुरू होता है, आपका पाँव जो है वो फूलने लग जाता है, उल्टियाँ आने लगती है, खाने पीने का भी मन नहीं करता है। जब आपको सिम्टम्स होता दिखता है तब आप काफ़ी परेशान होते हो, और तब आपको पता चलता है कि आप जो हो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से जूझ रहे हो। अब तक जितना मैम ने बताया कि इसके सिम्टम्स तक भी हमें बताया कि इसके आसार क्या क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें सीकेडी है, तो फिर हम मैम से ये जानने का कोशिश करते हैं कि इसका इलाज क्या है। फर्स्ट finding will be a urinary protein, that is the microalbumin in the urine. It's a special test, microalbumin. But routine test, when you do a routine test also, you can have protein in the urine, and increased urea creatinine, and they can have an ultrasound of the abdomen. Later stages, the diabetics will have normal sized kidney. Kidney will not show any change by doing a scan of the abdomen. But in long-standing hypertension, the kidneys become small, or an unknown disease of the kidney which is going on without any symptoms. There also the kidneys can become small. Or a big kidneys can also happen where there is a cyst in the kidney. All those things, like by doing a simple abdominal scan will lead a clue that is this patient having a kidney disease or not. So these are the major tests, and later stages they can have anemia, like hemoglobin will be very low, and potassium, sodium, potassium, bicarbonate, these are the electrolytes which can go up
or come down in later stages of kidney disease, and they can have bone disease, like it can affect the bones also, like calcium, phosphorus. All this tests will tell us whether the patient has got these complications of kidney disease. अभी जैसे मैम ने हमें बताया कि सबसे बेहतर तरीका इलाज का यही है कि अगर हम जो है इसका रेगुलर चेक करा लें, क्योंकि कहते हैं ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो थोड़ी देर ही सही, आज ही अगर समय मिले, समय आप निकालिए और अपनी किडनी का इलाज ज़रूर कराइए, क्योंकि जैसे कहा गया है कि ये एक शांत शिकार है। ये चुप से अंदर अंदर शिकार करता रहता है और आपको जो है बीमार कर देता है। और जब इसका प्रभाव किडनी पर पूरी तरीके से हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हम इसके शिकार हो चुके हैं। तो तब तक काफ़ी देर हो जाती है। तो जो सिम्टम्स अभी मैम ने बताए हैं, उन सिम्टम्स को अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ऐसा फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली हम तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप तुरंत अस्पताल जाएं और इन चीज़ों का जांच कराएं। जैसे अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट कराना हो गया, आप अपना यूरिन टेस्ट कराना हो गया, और ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपके अंदर आपको नज़र आती है, आपके अगल बगल आपके परिवारजनों में नज़र आती है, तो आप इलाज ज़रूर कराइए। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरीके से डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन देते हैं, उन मेडिकेशंस के पूरे कोर्स को पूरा ज़रूर करिए और साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ज़रूर अपनाएं। हमने आज किडनी गुर्दों को लेकर बहुत कुछ जाना है मिली मैम के थ्रू। अभी हम अंत में मैम से ये जानना चाहेंगे कि इसके इलाज के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। So the treatment, early stages, we can arrest the disease, or control the disease. So there are certain medications which can be given to the patients who have got stage 2 to 3, and even 4 also we can control it. And but they should be referred to a nephrologist, and they should have a regular follow-up with the nephrologist, because we will never know when suppose the creatinine is 2. It can go up in the next 3 months or next 6 months. Now, how do we know that? Exactly. Only by doing the test, blood test. Only we'll come to know that. So they should have a regular follow-up with the specialist. How often should one normal healthy person should check if they have CKD or not? The patients, once a year or once in 2 years, depends. If they don't have any comorbidities like other diseases, what about a diabetic person? Diabetic every year. Every year. Hypertensive every year. Right. And if you know a family history after certain age, like your parents or somebody had kidney disease, they should have it every year. Oh, it's hereditary. Some diseases are hereditary. Okay. So they have to have every year. The treatment of a terminal kidney disease, that is stage 5, stage 5, that is the end stage, we say end stage kidney disease. There the specific treatment comes in. Okay. That is dialysis and kidney transplantation. That can be pretty expensive, right? It is expensive. That's why we are telling to prevent and control the disease. And by control, diabetics should have a very controlled blood sugar. But sometimes people say, my blood sugar is very much under control, why am I getting? It depends on each person, their genetic makeup, and all diabetics will not get kidney disease. Right. Whether they are under control or non-control, they can have. Okay. It depends. And patients with chronic kidney disease, not everyone goes into very fast stage of progression. Some people take delayed progression. Right. Some fast. Why does this happen? To some bodies it goes so fast, and some bodies. Each one's body, how it goes. Okay. Not lifestyle or not. Of course, lifestyle will, of course, like faster the progression. Make it faster, Make it faster. Plus, it depends upon different body to body. Okay. Not all the diabetes will have all these complications. Right. Not all the hypertensives will have these complications. So each person is different. Why I said to go and see a nephrologist regularly is, when certain level comes, we have to prepare the patient to go for the treatment. Say for example, when their creatinine goes, normal creatinine is 1 or less than 1. Okay. Or up to 1.2 is we consider it as normal blood, urea and creatinine. Okay. When it goes above 5.5 or 6, then you have to
tell them that okay, you have to mentally prepare yourself to go for a treatment like dialysis. If they are going, that is their option. See, because the money is also a major part. So whether they are going for dialysis or they want to go for transplant. If they are planning to go for a dialysis, we have to create an arteriovenous fistula. Dialysis means it is the purification or cleaning of the blood. So blood will be taken out, go through the machine and send it back. It's a process. So that is one complete dialysis is 4 hours. So how do we take the blood out? We need not just 5 ml, 10 ml. So we need to have about minimum 300 ml of blood per minute. It should come out of your body, go through the machine and then send it back. So normal blood vessels are not give that much of blood flow. So we create a connection between your good blood vessel, that is artery, and a bad blood flowing vessel called vein. So we connect it. So that it will mature and become thick one. They have to do the exercise. It will take time. That's why I said when the creatinine goes up, we have to tell them to create the fistula if they are going for dialysis to make life easy for both. Like when they come to an emergency, they have to put a temporary line, and then all will take time. Like if they come with a real breathing difficulty, it is difficult. Then they have to ventilate. Why all this? Like that what we are going through. So that should be there. If they are going for a transplant, if they have a relative, say relative means father, mother, brother, sisters, or their first cousins. They can, or the husband or wife. If they husband or wife. That can match? Yeah, blood group match. Because they have a psychological bonding. It's not only the blood relation. So husband and wife, wife to husband or husband to wife. This is possible. So they have to have the same blood group, the recipient or the donor. Either same blood group or a donor can be off for any blood. So they have to ask people, find a donor and prepare. Then before dialysis we can transplant. अभी आपने सुना कि ये कितना लंबा प्रोसेस है और कितना महंगा प्रोसेस है, फिर चाहे वो डायलिसिस हो या फिर ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि किसी और के शरीर का जो गुर्दा है वो आपके शरीर पर लगाया जाए। और डायलिसिस का भी प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। आपको आईसीयू में रखा जाता है, लगातार आपका जो खून है उसको फिल्टर किया जाता है, और ये भी एक काफ़ी महंगा प्रोसेस है। होना तो ये चाहिए कि हमारे हर सरकारी अस्पतालों में इन सुविधाओं की उपलब्धि, मगर क्या ये सुविधाएं हमारे सरकारी अस्पतालों में मौजूद है? जवाब है ना। तो फिर हम निर्भर होते हैं ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर और प्राइवेट डॉक्टर्स पर। शुक्र है कि हमारे देश में ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं जो है बखूबी इलाज करते हैं और साथ में सजेशंस भी देते हैं। तो अगर हमें ऐसी बीमारियों से, ऐसी ख़तरनाक बीमारियों से बचना है, इनसे सुरक्षित रहना है, तो इसका एकमात्र मंत्र यही है कि हम जो है अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दें। हम अगर अपने खान पान पे ध्यान देंगे, हम अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखेंगे और एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, तो डेफिनेटली कई सारी बीमारियों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसका जो सजेशन यही है कि हम जल्द से जल्द जो है निकटतम अपने अस्पताल में जाएं और अपनी खून की टेस्ट कराएं और फिर जो ट्रीटमेंट है उसे शुरू करें ताकि हम स्वस्थ रह सकें। हम डॉक्टर मिली मैथ्यू जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने समय निकाला है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि चेन्नई से एमजीएम हॉस्पिटल से 5 स्पेशलिस्ट आते हैं, उसी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पे मिली मैम हर महीने 2 दिन आती हैं, दूसरे और चौथे हफ्ते में। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि हम स्क्रीन में आप लोगों को लगातार नंबर शो कर रहे हैं जहां पे आप जानकारी लेने के लिए इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं, और हम इनको पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं जो एक सेवा भाव से हमारे द्वीपों में आती हैं। इनकी पूरी टीम आते हैं और
हैवी डिस्काउंट्स के साथ यहाँ पे जो है अपनी सर्विस यहाँ पे देती हैं। अंत में हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि कृपया मिली मैम ने जिन जिन बातों को कहा है कृपया उनको ध्यान रखें ताकि आप और आपके परिवार जो हैं सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जाने से पहले हम डेफिनेटली चाहेंगे कि मिली मैम हमारे व्यूअर्स को कुछ अच्छा सुझाव जरूर दें। Everybody should have a healthy lifestyle. And if you have a problem, you should take care of that. Nobody else can take care of that. It's just in your hands. You have to take care. And if that person is the breadwinner, definitely he has to take care of the family also. So don't take it easy. किसी भी अगर बीमारी से बचना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप खुद जिम्मेदार बन जाएं। ये आप ही के हाथ में है कि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो या अस्वस्थ। यही मैम का भी सुझाव है। तो इसे गंभीरता से लेते हुए रेगुलर चेकअप्स करें, आप अपने खुद का भी और परिवार वालों का भी, और उनकी भी सहायता करें कि उन्हें जो है बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिले ताकि न सिर्फ आप, आपका परिवार, बल्कि हमारा समाज और देश का हर एक नागरिक स्वस्थ रहे और हम सब जो है अपने देश के विकास में अपना अपना योगदान ज़रूर दें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।